Good morning, students. I am Monica Kapoor, your social science teacher, and today we are going to do Geography chapter Physical Features of India. Physical features means different landforms of Earth like mountains, plains, plateaus, deserts, islands, etc. Do you know how these landforms have been formed? To understand this concept, we must know what is the internal structure of Earth. अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लिक्विड है। उसका आउटर सरफेस तो बहुत हार्ड है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट और लिक्विड है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ। आउटर लेयर विच इज़ नोन एज क्रस्ट, मिडल लेयर इंटरनल लेयर विच इज़ नोन एज मेंटल, एंड द मोस्ट इंटरनल पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट इज कोर. So the outer layer of earth, which is very hard, which is known as crust, is also comprised of sedimentary rocks. जो अर्थ की बाहर की लेयर है क्रस्ट, वो बहुत ही हार्ड है और उसी को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. और अर्थ के अंदर जो मिडल लेयर है वो कंपैरेटिवली क्या है? सॉफ्ट है. और उस सॉफ्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल, बट इट कंप्राइज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. और बिल्कुल सेंट्रल कोर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कोर, but it is in liquid form and it is made up of igneous rocks. Basically all these three rocks are same: igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. All rocks are same. Primary rocks are igneous rock. Their state of occurrence is different. When these rocks are in liquid form, these are known as igneous rocks, and when this liquid magma material erupted on the earth's surface and came out of the earth's surface, then it becomes the sedimentary rocks. But when it remains inside the earth, it is known as metamorphic rocks. So with the help of this information, we will read how these landforms have been formed. I hope internal structure of earth is understood. One more point I want to add, that the outer layer of earth crust comprised of very thin portion of earth, and maximum portion of earth covers with mantle as well as core. Now moving forward to the next topic, our next topic is theory of plate tectonics. अब साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाई है अर्थ के रिगार्डिंग कि जो अर्थ की आउटर लेयर है क्रस्ट, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्लेट्स. एंड दैट क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स एंड सेवरल माइनर प्लेट्स. और इन्हीं प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स. 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड अदर स्मॉल प्लेट्स मीन्स आइलैंड्स. So there are 7 major continents and scientists have called them as plates. Like you know, Asia is the major plate of the earth crust. Then second is Australia, third North America, then South America, Africa and European plate. So these are the 7 major plates, and according to scientists these all plates move. ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, बिग लैंड मासेस, ये मूव करते हैं. और इनकी मूवमेंट जो है वो 3 तरह की है. नंबर 1 मूवमेंट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट मूवमेंट. जब एक प्लेट जो है वो इस तरफ आ रही है और दूसरी प्लेट जो है वो उसकी तरफ आ रही है. एंड व्हेन दे कोलाइड, जब ये भिड़ जाती हैं तो ये क्या करती है? क्रम्बल करती है, शेक करती हैं. और आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में अर्थक्वेक आते हैं वो तभी आते हैं व्हेन 2 प्लेट्स कोलाइड एंड क्रम्बल. एंड व्हेन दे कोलाइड एंड क्रम्बल, देयर इज अ स्ट्रेस जनरेटेड बिटवीन 2 प्लेट्स एंड इट बिकम फोल्डेड. और जब वो फोल्ड हो जाती हैं तो हमारी कंट्री के जो माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, वो ऐसे ही बने हैं. when two plates coming together when two plates coming towards each other and collide and formed stress and it become folded, and it is the reason of the formation of mountains. And the second movement of plate is known as divergent plate. अब नेम से पता चल रहा है डाइवर्जेंट मीन्स कि वन प्लेट इज मूविंग
this side, so the other plate is moving towards the opposite side. So they are moving in opposite of one another. When they move in opposite of one another, there is a stretch generated between the plate and it resulted into the fault of the plate. वो बीच में से टूट जाती है जब एक प्लेट जो है वो इस तरफ चल रही है, एक प्लेट जो है वो दूसरी तरफ चल रही है, तो बीच में अगर वो जुड़ी हुई है तो उसके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एक फॉल्ट, वो टूट जाएंगी, और जब वो टूट जाएंगी देन इट विल रिजल्टेड इनटू द वोल्केनिक इरप्शन. Now the third movement of plate is transform boundaries. When one plate is moving up and the another plate is moving down, they are passing and crossing one another. So according to theory of plate tectonics, these movements have changed the size and position of Earth. Earlier Earth position and size was different. You know, Earth is a living being. It is growing. The most important example that when we sow seeds, it resulted into a plant. But the example of earthquake, example of volcano also tells that earth is a living being. There is a convectional current, एक अंदर से करंट निकलता है जिसकी वजह से पहले कभी ये सारी की सारी जो अर्थ क्रस्ट थी वो एक ही थी, सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया. बट वन कन्वेक्शनल करंट केम आउट ऑफ earth and it splitted the whole crust. Earlier it divided into two parts. The northern plate part was called Angara plate or the Angara island, sorry, Angara land, and the southern part of the land was known as Gondwana land. आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में जितने भी हमारे सर्दर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडियन पार्ट, they all, or Australia, Antarctica, these all earlier were the part of Gondwana land. They were the part of one landmass. And all the northern continents like North America, Europe and Russian part of Asia, they were the part of Angara land. And due to the convectional current, it splitted into, now presently it is splitted into 7 continents and several islands. So for today, this topic is enough. Next part we will do next time in the next video. Till then, stay home, study from home and be safe. Thank you.